Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। A warm welcome, Sushma. धन्यवाद मनोज एंड थैंक यू राजेश। आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लिक। Retail inflation eases to 5.2% in December, mainly due to fall in food prices. Domestic stocks logged modest losses. Sensex closes below 60,000 mark. Nifty settles below 17,900 level. And the rupee appreciates to 81 rupees and 55 paise against the US dollar. देश में खुदरा मुद्रास्फीति की दर बीते महीने दिसंबर महीने में मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों के दाम घटने से कम होकर 5.2% पर आई। घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक हुए मामूली घाटे के साथ बंद। सेंसेक्स 60,000 के स्तर से नीचे फिसला। निफ्टी भी 17,900 के स्तर से नीचे आकर हुआ बंद। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया मजबूत होकर 81 रुपये 55 पैसे पर पहुंच गया। Retail inflation based on the Consumer Price Index CPI eased to a one-year low of 5.72% in December from 5.88% the previous month. As per the Ministry of Statistics and Program Implementation data released today, the retail inflation slipped to lowest level since December last year. Food price index dipped to 4.19% in December from 4.67% in November. The CPI has come below the Reserve Bank of India's upper margin of 6% for the first time in the calendar year 2022. The government has mandated the central bank to maintain retail inflation at 4% with a margin of 2% on either side. In its December monetary policy meet, RBI Governor Shaktikanta Das had said that RBI would continue its fight against inflation despite the worst being behind us, suggesting the central bank was likely to remain hawkish in the near term. And now, Sushma, that we are in the band which is below 6%, you think the RBI has a prospect of less aggressive interest rate hikes in the months ahead? Yes, obviously they would moderate their rate hikes, but I think the RBI will also take into account the global scenario where you have a lot of inflationary pressures on the economy right now. Oil prices, even though they have moderated tremendously, there is still a expectation of volatility with demand rising due to China demand expected to go up. And of course there are still the global supply chain issues. So I think the Reserve Bank is likely to take a cautious approach and perhaps continue rate hikes for at least maybe one more session. At the same time, one of the issues when we have talked about food inflation, one of the issues that has been talked about is that in India it has been more of a supply side issue. And with the fresh harvest coming into the market in the last few months,
and of course even other items where you have the harvest coming in the October-November season, the situation has eased considerably. And of course fuel prices also. But in fuel prices, of course, we have to take into account the fact that the oil companies have not really been increasing prices at the rate at which they are at the global level. सुषमा जी, यहाँ पर महत्वपूर्ण यानी जो प्रश्न बनता है वो ये कि ये जो 6% के दायरे में पिछले पूरे एक साल के दौरान हम कहें यदि कैलेंडर वर्ष 2022 में पहली बार 6% से नीचे आया है आंकड़ा, हम इसे तात्कालिक माने यानी एक महीने के लिए कम हो गया, या यह रुझान आने वाले दिनों में भी दिखेगा? क्योंकि अभी जैसा आपने कहा कि कृषि उत्पाद जो है मतलब बाजार में पहुंच चुके हैं, उसका असर खाद्य पदार्थों के मूल्य में मुख्य रूप से हुआ है। आने वाले दिनों में रुझान कैसा लग रहा है आपको? देखिए, आने वाले दिनों में अभी मेरे ख्याल में आपकी बात ठीक है कि ये हो सकता है कि सिर्फ ये एक महीने के लिए, लेकिन जो ट्रेंड अभी दिखाई दे रहा है, क्योंकि नवंबर में भी ये जो है इन्फ्लेशन कम हुआ था, अब दिसंबर में और कम हुआ है, तो मुझे लगता है ये ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है और कंटिन्यू रहेगा। लेकिन हमें इसके ऊपर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ग्लोबल हेडविंड्स अभी हैं और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अभी भी उथल पुथल हो रही है। अगर आप देखें कि विश्व भर में आर्थिक स्थितियां बड़े बड़े देशों में अभी भी अच्छी नहीं है, और इन्फ्लेशन की अगर हम बात कर रहे हैं हमारे देश में, हालांकि काफी 4-5 महीने में ये जो है काबू में आ गया है, मतलब 6% से नीचे आ गया है। लेकिन अगर आप देखें डेवलप्ड कंट्रीज में, यूके में शायद 9% है, यूरोप में कई देशों में 9 से 10-11% तक है, और यूएस में भी 9% था। अभी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद ये 6% तक आ जाए। तो यहाँ पर हमने काफी अच्छे तरीके से इन्फ्लेशन मैनेजमेंट किया है, और इससे हमें एक मतलब अचीवमेंट मानना चाहिए इस ये रिजर्व बैंक और ये आंकड़े की वजह से, और ये सरकार और नीतिगत फैसलों से, और ये सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इकट्ठे का जो उन्होंने कोशिश की है इसके ऊपर। Sushma, you also mentioned that the food price index dipped to 4.19%, primarily due to the oil price coming down. So what is the tolerance of the oil price band that India can afford? You know, because if it goes up, then the food price index will also go up. No, I didn't say that the food price is affected by oil. I said fuel price index is also a factor. One of the factors. But yes, this is a very important issue what you talked about, the fact that how much can we tolerate. Now, I think we could take the level that was fixed in the budget last year, which was $75 to $80 per barrel. And that was considered comfortable, that the exchequer can bear this burden. So up to about $80 per barrel. Now, currently prices, Brent crude prices are about, say, they have just gone up to about $83 per barrel. But if you see the entire year, they have actually been ruling at about $100 per barrel. That is far too high for India. And as I said, the oil companies, the domestic oil companies, did not raise prices, retail prices, to the extent that international prices had gone up. Therefore, there was less of a pass-through effect on the economy. But, you cannot avoid it completely because it comes through in many other ways. So in France also the inflation figures have come down. In the US also, as you mentioned, they have more likely they're likely to come down. I think we should be getting the figures soon. So what repercussions can we feel or will work in our favor if the world over the inflation is coming down? Is that a good, will give us some kind of cushion to do a lot of stuff and go ahead with, stuff in India? Well, I think that the world over, inflation has not been coming down at the rate it has been in India. Okay. Now, if you look at the UK, it's not likely to come down to 5 or 6%. Now, and for developed economies, what is their normal rate of inflation? It is about 2% or 3%. And therefore, for them, even 5 to 6% is very high. It's huge. Is huge. And yet they had gone up to 8-9%. And they are still at that level. So, I think for those countries, they are still in a kind of crisis mode.
and the Federal Reserve of the US, for instance, is likely to continue its aggressive rate hikes to ensure that inflation comes down to the level that it has been in the past. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। औद्योगिक उत्पादन के मोर्चे पर भी शानदार खबर आई है। नवंबर महीने के लिए आंकड़े आज जारी कर दिए गए हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से, और इसमें कहा गया है कि नवंबर 2022 में औद्योगिक उत्पादन आंकड़ा 7.1 पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 महीनों में लगातार गिरावट के बाद, यह 4% की गिरावट के बाद आईआईपी में यह वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 में यह दर 1% रही थी। नवंबर में विनिर्माण क्षेत्र में 6.1% की वृद्धि हुई, जबकि खनन क्षेत्र में 9.7% की बढ़ोतरी हुई है। बिजली उत्पादन 12.7% बढ़ा है। कुल मिलाकर औद्योगिक उत्पादन अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच इस वित्त वर्ष में 5.5% रहा, जबकि 17.6% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। आईआईपी एक सूचकांक है जिसमें विभिन्न प्रमुख क्षेत्र के हमारी अर्थव्यवस्था को दर्शाने वालों का आंकड़ा नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यहां पर अहम सवाल की एक खबर मुद्रास्फीति के मोर्चे पर और दूसरी खबर औद्योगिक उत्पादन के मोर्चे पर किन अर्थों में ले हम इन आंकड़ों को। यदि दुनिया भर में प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि भारत उभरता हुआ ठिकाना है, वैश्विक मंच से कहा जा रहा है, तो ये आंकड़े क्या दर्शा रहे हैं? देखिए, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, अगर आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वो भी यही कह रहे हैं कि इंडिया की जो आर्थिक गति है इस वक्त सबसे तेज होने जा रही है 2022 में, और 2023 में भी शायद फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी। तो सिर्फ हमारे अपने नजरिए से नहीं, बाहर के देशों के नजरिए और बाहर के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनके नजरिए से भी इस वक्त ये है। अगर आप ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखें, ये 7.1% को देखें, थोड़ा सा हमें कॉशियसली लेना चाहिए, क्योंकि वो पहले ये 4% की ये जो बेस इफेक्ट काफी लो, कंट्रैक्टिंग बाय 4%, तो ये जो है बेस इफेक्ट हमें देखना चाहिए कि वो बेस काफी लो था। फिर भी ये पॉजिटिव ग्रोथ है। और अगर आप देखें जो अप्रैल से नवंबर तक का जो आंकड़ा है वो 5.5% है, वो अच्छा है। और हालांकि क्योंकि पिछले 2 सालों में ये 2020 जो था पेंडेमिक ईयर था, 2022 भी रिकवरी लेवल था आफ्टर कंट्रैक्शन इन 2020, तो ये जो 5.5% है ये काफी अच्छा है, अच्छा माना जाना चाहिए। और अगर ये जो 7.1% है, अगर आप उसको रियल टर्म्स में ले, शायद 3% होगा या 3 या 4%। और ये जनरली फाइनेंशियल ईयर में जैसे फाइनेंशियल ईयर बढ़ता जाता है तो सारी चीजों की जो गति होती है वो तेज होती जाती है। तो अगर आने वाले महीनों में और भी अच्छा हो जाता है तो फिर 5.5 से अगर 6% हो जाए इस साल, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। Sushma, also the manufacturing sector grew at 6.1%, yes. Mining 9.7%, and electricity generated was 12.7% higher. So this also shows that the employment generation during this period must be very good. So that figure also should be coming soon. So that's good for the economy. Yes, so the manufacturing is a very important component of the IIP, and 6.1 is definitely very positive. I think also electricity is very important because here infrastructure power is one of the most important components for the entire manufacturing sector, and if power has grown by 12.7%, I think that is all to the good for the entire economy. So this is all this data right now is looking good, but as your colleague pointed out, we can only hope that the next set of data, that is next month, continues this trend. यहाँ पर श्रोताओं हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ।
उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। घरेलू शेयर बाजार में आज बिकवाली तेज रही, हालांकि गिरावट थोड़ी सी हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 प्रमुख कंपनियों का सूचकांक 60,000 के स्तर से नीचे आ गया। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 50 प्रमुख कंपनियों का सूचकांक 17,900 के स्तर से नीचे आकर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में आज 147 अंक कमजोर होकर 59,958 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 38 अंक घटकर 17,858 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.24% की कमी आई। उधर स्मॉल कैप इंडेक्स बिना किसी खास उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के नजदीक ही बंद हुआ। The Sensex and the Nifty today logged losses. Index of top 30 companies at the Bombay Stock Exchange ended below the 60,000 mark. The index of top 50 companies at the National Stock Exchange closed below 17,900 level. The Sensex fell 147 points to settle at 59,958. The Nifty also slipped 38 points to finish at 17,858. In the broader market at the BSE, the mid-cap index fell 0.24% and the small-cap index ended almost flat. In the Sensex pack, 15 companies posted gains while 15 witnessed losses. Ultratech Cement was the top gainer as it rose 1.8%. Larsen & Toubro gained 1.7%. HCL Tech added 1.6% and Maruti ended 1.1% up. On the other hand, Reliance declined 2.1%. Axis Bank fell 1.5%. Tata Motors slipped 1.4% and Kotak Bank ended 1.3% down. In sectoral indices at BSE, 9 sectors gained while 11 logged losses. Capital Goods Index gained 0.8% and the industrial sector rose 0.5%. IT Index added 0.4% and the power sector ended 0.3% up. On the other side, oil and gas and energy both plunged 1% each. Telecom declined 0.8% and the FMCG index fell 0.4%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,612 companies gained while 1,888 fell. Shares of 152 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 2 पैसे मजबूत हुआ, 81 रुपए 55 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.16% घटकर 103.02 पर चल रहा था। सुषमा जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। थोड़ी सी गिरावट हुई है बाजार में, किन अर्थों में ले रही आज के कारोबार को? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी आज तारीख कौन सी हुई है, 12 तारीख है और सिर्फ 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते रहते हैं बजट के लिए और हमेशा ये बजट से पहले काफी वॉलेटिलिटी होती है और ज्यादातर बेरिश ट्रेंड होता है मार्केट में। ये अमूमन देखा जा चुका है कई सालों से। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मार्केट इस तरफ इस वक्त देख रही है, जैसे हम बात कर रहे थे, ये मुद्रास्फीति की बात हो रही थी कि जो यूएस का डेटा आने वाला है दिसंबर का, कि उसका असर क्या होगा, कितना होगा। हम तो ये सोच रहे हैं कि शायद 6% है, जैसे आपसे बात की थी, लेकिन हो सकता है ज्यादा हो, ज्यादा कम हो, तो इसका भी बहुत असर होगा मार्केट के ऊपर। एक तो ये है, थोड़ी सी टेंशन है। और तीसरी बात ये है कि अभी पिछले महीने से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काफी सेल ऑफ किया है हमारी मार्केट में। ये मेरे ख्याल में पिछले
6 महीने में सबसे ज्यादा सेल ऑफ अभी इस महीने से में हुआ है। और इसमें ये भी है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी काफी इन्वेस्ट किया है मार्केट में, पर फिर भी असर तो होता है। FIIs ने काफी विड्रॉ किया है। अगर देखा जाए तो जब से फेडरल रिजर्व ने अपनी ये जो अग्रेसिव रेट हाइक शुरू की हैं, तब से FIIs ने विड्रॉल शुरू किया, लेकिन बीच में अगर आप देखें 6 महीने पहले शायद, तो उन्होंने फिर वापस आ गए थे और फिर निकल। लेकिन ये है कि जो इंडिया की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है, उसके बेसिस के ऊपर और इसकी जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं हमारी मार्केट में, उसकी बेसिस पे एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि FIIs वापस आएंगी। Okay. So, you mentioned that 12 days only have passed in the year, 2 weeks roughly, and not all that is hunky-dory in these 2 weeks. So what is your reading for the year ahead for the market? Well, the market, I think, we have to look back a little bit first of all, that the market was on a completely bullish trend, for instance, in 2020. And even right up to 2021, we have had a very surprisingly, the economy has been tanking, but the stock markets have been going up. And in fact, this is also a phenomena seen not just in India but around the world. So, but now in the last 1 year, you have seen that there have been very sharp ups and downs in the Sensex. And reflective, of course, of the geopolitical environment, there have been so many changes. We thought the pandemic was over and everything is okay, but then came Ukraine war, and that has changed everything. So the market has been reacting. There have been, as we talked in June probably last year, FIIs withdrew from the market, then they came back. Now again they have withdrawn from the market. Now I think that my expectation is that the geopolitical scenario is going to continue to be dismal. We are going to have global headwinds affecting our economy, and therefore but at the same time, India remains the fastest growing economy, a major economy, especially, or you can say emerging economy is the fastest growing. So on a long-term basis, valuations are attractive, and I would say that in 2023, it is hopeful that we get back to a fragile economic recovery path, and that the stock market is likely to move in a more bullish fashion than it has been last year. So you mentioned global headwinds are going to be there. Yes. But what about the tailwinds that can move certain sectors? Are there new sectors that you are gung-ho about, or which are the sectors that you feel is going to have a lot of traction in the year? Well, I think one is banking. Okay. Because banking has, we have to see that banking was in a very bad situation in our country, and now suddenly we were going under due to heavy NPAs. Now the NPA situation is extremely good, or relatively, I will say, and there has been consolidation in terms of the mergers that the government has undertaken in the banking sector. The number of banks are now much less, and therefore I think that the banking sector is looking good. It's a very good potential. Second, of course, continues to be IT and telecom will always be the plus factor in our country. Okay. So you're saying banking is something that one should be gung-ho about, and we should look at the worldwide financials, consumers, and IT as the new sector. What about pharma? Pharma has always been good, but pharma has run into some problems. Lately, we have had certain problems of small companies, but of course, our big companies are doing exceedingly well. And of course, during the pandemic, we showed how good we are with the vaccines and Serum Institute and. So we showed how good we are with vaccines. Okay. So we definitely pharma is an important area. You mentioned small companies. Your quick view on the small caps and the mid caps. Well, I think small caps and mid caps are actually under strain, right? Overweight? I would not say they are overweight, but I think they're under strain right now. They're under a lot of strain because they have not recovered as quickly as the larger companies, and they are still suffering from the overhang of the pandemic. आइए खबरों को विस्तार दें, चलें वैश्विक शेयर बाजार की ओर।
अमेरिका में अनुकूल आंकड़े आने की उम्मीदों पर निवेशकों ने आज दुनिया भर के शेयर बाजारों में लिवाली की धारणा बनाई है। निवेशकों में यह विश्वास दिखा है कि इन जो आंकड़े आने वाले हैं उनसे मुद्रास्फीति में नरमी आएगी और नीतिगत रूप में इसका लाभ हर किसी को मिलेगा। एशियाई शेयर बाजार में आज एक सीमित दायरे में कारोबार हुआ। इसके अलावा जापान में आर्थिक नीतियों में अति उदारता बरते जाने के प्रभावों पर समीक्षा किए जाने संबंधी खबरों से येन में आज मजबूती दिखी है। सिंगापुर को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख शेयर बाजार आज तेजी के साथ बंद हुए। बिकवाली के दबाव में सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.1% नीचे आ गया। हांगकांग के हिंगसेंग में 0.4% की वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.2% लाभ में रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.1% की वृद्धि हुई। उधर जापान का निक्केई 225 सूचकांक बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो ताजा समाचार मिलने तक वहां लिवाली दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 और फ्रांस का CAC 40 दोनों सूचकांक 0.7% बढ़त के साथ चल रहे थे। जर्मनी के डैक्स में 0.6% की तेजी नजर आ रही थी। U.S. stocks ended up sharply yesterday with the S&P 500 and Nasdaq gaining more than 1% each as investors were optimistic ahead of an inflation report that could give the Federal Reserve room to dial back on its aggressive interest rate hikes. The Nasdaq Composite Index gained 1.8%, the S&P 500 rose 1.3%, and the Dow Jones Industrial Average added 0.8%. How happy are you to hear that Fed Reserve room to dial back could be there on the anvil? Well, yes, I think that's certainly positive news. It is certainly good for. It will be good for India. We won't have so much of FIIs moving away from here. But I still think that the Fed has. There's a difference between India achieving 5.7% and America achieving 5.7 or 6%, because for them that is very high. For us, 5.7 or 6 is the average tolerance band. Their tolerance band is much lower. So the path they have to traverse is more than us. So what about, you think the trajectory will come down and they will revive the hikes again in the year, in the 2023 later part? There has been some speculation on this, and the talk is that the current head of the Federal Reserve is recalling what happened in the 70s in the US, and that they didn't take enough action on inflation at that time, and he is more of a hardliner on inflation. So if those reports are true, then probably they may continue with, maybe not as aggressive, but will continue with rate hikes. Moving on, the oil today rose more than 1%, supported by optimism over China's demand outlook and hopes that upcoming inflation data from the United States will point to a slower increase in interest rates. In intraday trade, Brent crude was trading at $83.80 per barrel, while WTI crude prices was at $78.40 per barrel. आइए चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी महीने में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 150 रुपए बढ़त के साथ 55,840 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। उधर मार्च में आपूर्ति की जाने वाली चांदी भी ताजा समाचार मिलने तक 740 रुपए मजबूती के साथ 68,715 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य अंतर्दिवसीय कारोबार में बढ़त के साथ $1,888.60 प्रति औंस पर चल रहा था। चांदी में भी थोड़ी सी मजबूती थी और ये $23.90 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। बहुत संक्षेप में सोना किस दिशा में जाता दिख रहा, चमक इसकी और तेज होगी? बहुत संक्षेप में मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी जो इंपोर्ट्स हैं हमारे देश में, क्योंकि ये दाम बहुत ऊंचे गए हैं, तो इंपोर्ट्स एकदम से कम हो गए हैं, तो मेरे ख्याल डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से सुषमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for being with us, Sushma. And before we close the headlines once again, retail inflation eases to 5.2% in December, mainly due to fall in food prices. The index of industrial production (IIP) grows by 7.1% in November 2022.
Domestic stocks logged modest losses. Sensex closes below 60,000 mark and the rupee appreciates to 81 rupees and 55 paise against the US dollar. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.